Okay, guys, so we are live on YouTube as well, right? So we will start with the session. So this is the very first session, the introduction and orientation session for this EEYP course, which we call Early Leader and Young Professional course, right? So you guys have enrolled in this, so you must have a brief idea about this course. आपको ये बैनर कहीं ना कहीं दिखा होगा, तभी आपने उस पर क्लिक किया होगा, तभी आपने enroll किया होगा, right? So you are bit aware about this thing, ki what are the course outline and everything. In this session, we are going to understand why the course is there, what is the requirement, what is the expectations you can have from this course, and how this is going to help you in your MBA. Okay? So let's move ahead. So before that, what are your expectations from this session? आपने बैनर देखा होगा, आपने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होगी, उस पर लिखा होगा. What are your expectations? Please put that down in the chat box so that I can know and we can align our expectations on a similar line. जो भी whatever thoughts you have, क्या पहले क्या चीज आपके दिमाग में आया था जब आपने उस बैनर को देखा था? Or the people who are live from YouTube, you can also put that in the chat box. I'm opening my YouTube as well so that I can see your comments there. Okay, cool. Profile reading, अच्छा. Introduction of a B school, busting myths. Okay, I hope आप कुछ myths लेके आओगे अपने साथ. Interesting opportunities, preschool, B school skills. Okay. Getting ready for the B school rank. चलो ठीक है. काफी क्लोज रिलेटेड है आप. टॉक्सिसिटी. भाई रिधिक से दूर रहा करो थोड़ा. चांस टू गेट अहेड. ठीक है. देखो, आई थिंक कि आप मैक्सिमम लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है वी आर वेल अलाइंड विद दैट. लेट्स सी कितना अलाइंड है हम. लेट्स मूव अहेड इन द सेशन. ओके, बिफोर दैट अगेन वन मोर थिंग आई एम आस्किंग यू, व्हाट आर द थिंग्स यू आर एक्चुअली इन फियर ऑफ, कि बी स्कूल में जाने से पहले किस बात का डर है आपको और किस बात के लिए आप एक्साइटेड हो? एक्साइटेड में चलो सैलरी तो चलो ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ. सैलरी चलो ठीक है, ये भी होता है कुछ लोगों का, ये भी मैं ही खुद से लिख दिया. इसके अलावा बताओ आप, व्हाट आर द थिंग्स यू आर एक्साइटेड फॉर? नेटवर्किंग, अच्छा. ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो. फ्यूर ऑफ फेलिंग, चलो ठीक है भाई, सही बात है यार. इफ यू आर इन्वेस्टिंग 20 lakhs मनी, दो थोड़ा डर होना भी चाहिए. लैक ऑफ इम्पोर्टेंट स्किल्स, ओके. लैक ऑफ स्किल्स. सोशल एक्सपीरियंस पहली बार है क्या आपका? ये क्या, किधर डालो इसको, फियर में डालो या एक्साइटमेंट में डालो? लाइक अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम, ओके. फियर तो नहीं हुआ यार, चलो ठीक है. अपॉर्चुनिटी. फियर ऑफ प्रेजेंटेशन बट यू लर्न ग्रेजुअली, चलो अच्छी बात है. तो गाइज, जो भी आपके फियर है वो एक्चुअली जेन्यून है, होने चाहिए, ठीक है. फेल होने का फियर सबको होता है. नाउ अगेंस्ट फियर और बढ़ चुका है बिकॉज वी नो द एक्चुअल फिगर दैट 100% लोगों की प्लेसमेंट के स्मूथली नहीं होती है, राइट. देयर आर पीपल लास्ट 10%, 20% हु एक्चुअली सफर फॉर द प्लेसमेंट इन एनी सेंसेस. मे बी बाद में प्लेसमेंट हो, मे बी अपना डिजायर्ड रोल ना मिले, मे बी डिजायर्ड सिटी ना मिले, राइट. तो द फियर इज जेन्यून, वो होना चाहिए, दैट इज फाइन. लैक ऑफ स्किल्स, देखो यार, कोई भी स्कूल ज्वाइन करता है ना, वेन एवर एनी पर्सन ज्वाइन कभी स्कूल, दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि तुम सारे स्किल साथ में लेके आ रहे हो, राइट. यू आर स्पेइंग 20 lakhs तो तुम्हें सिखाएंगे, तो इसका फियर नहीं होना चाहिए. बी हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, बाकी तुम सीख जाओगे. एक्साइटमेंट फॉर सैलरी इज जेन्यून, चलो ठीक है, सीटीसी हमें दिखता है रिपोर्ट पे 20 लाख, 25 lakhs, 30 lakhs, तो एक्साइटमेंट होती है. घर में बता दिए होते हैं, एविशन होते हैं कि 2 लाख तो आने वाला है घर में. इन हैंड, चलो इन हैंड काट के वाट के 1,50,000 तो आ ही जाएगा, इतना मत सोचो आप, लोन तो पे हो ही जाएगा, राइट. तो देयर इज सम रियलिटी बिहाइंड दैट, वी डिस्कस ऑन दैट थिंग एज वेल. नेटवर्किंग हो जाएगी, करना चाहोगे तो हो जाएगी. पर बहुत लोग इनकर करने के बाद भूल जाते हैं कि ऐसे ये करना होता है. दे एक्चुअली मेक अ ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल और वो उसमें ही रह जाते हैं. सो इफ यू वांट कि नेटवर्किंग हो तो वो हो जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. Opportunities, you will get ample of opportunities there in terms of placement, in terms of networking and everything, right? So I think, yeah, your fear are genuine, your excitement is also genuine, ठीक है.
तो आई विल ट्राई टू कवर मोर ऑफ दिस थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड. नाउ आई हैव एन आइडिया कि क्या सोच के आप आए हो, राइट? सो व्हाई दिस EEYP is there? So this is first a course we want you guys to have at a free of cost before escaping into B school or preparing to crack one soon. PrepBee presents EEYP, a 2-week intensive zero-cost online bootcamp designed to give MBA aspirants and incoming students the right tools, mindset, and skills before day one. So we want you to have a certain mindset. Like, देखो, I will be genuine to you ना, 80% people who will joining B school ना, they will cry in their first month of B school. वो रोते हैं फॉर वेरियस रीजंस. मे बी उनको काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग लगता है. मे बी उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ये. मे बी लगता है कि यार ये तो मैं नहीं सोचा था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, राइट? तो देर आर एक्चुअली 80% ऑफ पीपल हु विल क्राई इन देयर रूम. ठीक है. बट आई विल टेल यू ना, दे क्राई बिकॉज दे डू नॉट नो दिस थिंग बिफोर हैंड कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है. नॉट बिकॉज कि ऐसा वो झेल नहीं सकते हैं, राइट? यू हैव अ सर्टेन माइंडसेट कि जाऊंगा, मस्त चिल लाइफ होगी, इंजॉय करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. पर पहला मंथ, पहला 1-2 मंथ वैसा नहीं होता है, right? Because you have a poor understanding of that, that is why you suffer. So that is why we have curated this course where you will explain you some of the mindset which you require to have before joining a B school, some of the essential skills you may require before joining a B school, ताकि आपको जाते ही अननोन सा फील ना हो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, राइट? दैट इज द सिंपल रीजन ऑफ दिस कोर्स, राइट? ताकि जब बी स्कूल में डे वन पे ज्वाइन करो उससे पहले यू हैव सफिशिएंट आइडिया अबाउट द बी स्कूल, अबाउट द MBA, अबाउट द थिंग्स यू हैव टू डू देयर, right? So let's move forward. Here we have three easy targets to learn. No MBA before an MBA, right? Learn the most important skills like Excel presentation. We have sessions on that as well. Get ready for the storm to come, right? Believe me, guys, 2 years of the MBA is going to be the most hectic year, 2 years of your life. ठीक है. पहले मुझे भी नहीं लगता था, पहले किसी को नहीं लगता है कि ऐसा होगा. और ज्वाइन करने के बाद हमें लगता भी नहीं है कि क्या हम इसको कर पाएंगे, क्या हम इसके थ्रू हो पाएंगे. बट देन ना सीनियर विल कम टू यू एंड से कि यार देखो हमने कर लिया ना, तुम भी कर लोगे. देन यू विल गॉट दिस कॉन्फिडेंस कि ठीक है, हमारे सीनियर ने किया तो हमारा भी हो जाएगा. सो कमिंग मंथ्स इज गोइंग टू बी हेक्टिक, डिफिकल्ट. यू विल क्राई बट यू विल लर्न हाउ टू एक्सेल द थिंग्स. ठीक है. सो वी विल गिव यू ग्लिम्स अबाउट दैट कि क्या होता है, कैसे होता है, सो दैट यू आर अवेयर बिफोर हैंड. ठीक है. दिस इज अ लॉन्ग स्लाइड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना एफर्ट क्यों डालना है, राइट? व्हाई दिस मच ऑफ एफर्ट? हम सो सकते हैं. 1-2 महीने बच्चे, आपने बता ही दिया, हेक्टिक होता है, परेशानियां होती है, सोने को नहीं मिलता है. तो द बेस्ट थिंग वी कैन डू, चलो सो जाते हैं यार, आराम करते हैं, अभी आखिरी समय मिला है, 1-2 महीने, राइट? बट व्हाई दिस थिंग इज देयर? चलो वेकेशन में चले जाते हैं कि लास्ट टाइम मिला है फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ. व्हाई दिस थिंग इज देयर, राइट? डू यू गाइस हैव एन आंसर फॉर दिस? क्या आपको पता है कि व्हाई यू आर पुटिंग दिस एफर्ट टू लर्न दिस थिंग बिफोर हैंड और टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग बिफोर हैंड? I obviously have an answer for that, but do you guys have an answer? यार ये चैट बॉक्स का एक मैं देखना भूल गया. To be ready to the wait. Okay, nice. So that we won't suffer later. You will suffer later, but you will know कि क्या सफर कर रहे हो. ठीक है. सफरिंग तो रहेगा. Because the real answer is FOMO. अच्छा, FOMO. हम्म. देखो, द क्लियर आंसर इज ना कि यू आर गोइंग टू स्पेंड 20 lakhs और 25 lakhs, 30 lakhs ऑफ योर मनी. ठीक है. ठीक है, दैट इज एजुकेशन लोन, दैट इज फाइन. बट यू आर गोइंग टू स्पेंड अ बल्क अमाउंट देयर, राइट? सो आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव दिस थॉट प्रोसेस इन योर माइंड दैट इतने पैसे लगा रहा हूँ, तो आई विल गेट एवरी पेनी आउट ऑफ दिस. ठीक है. हर चीज में कैसे मैं अच्छे से पैसा वसूल वसूल सकूँ अपना फ्रॉम द बी स्कूल, बी प्लेसमेंट, बी नेटवर्किंग, बी एनी अदर थिंग. राइट? अग्री गाइस? चाह ऑब्वियसली चाहते हो कि आप कितना पैसा लगाया तो सब कुछ वसूल लूं, राइट? एंड द हार्ड रियलिटी इज दैट ना कि काफी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि पहले 1-2 मंथ ऐसे ही निकल जाते हैं. इट विल सो हेक्टिक दे डू नॉट गेट टाइम. वो जो सोच के आए थे कर नहीं पाते हैं. देयर आर डिफरेंट थिंग्स, काफी चीजें से निकल जाती है. और वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट इज ना कि लेट्स से आपको बेसिक एक्सेल नहीं आता है, आपको नहीं पता वी लुकअप कैसे लगाते हैं, एच लुकअप कैसे लगाते हैं, राइट? फर्स्ट क्लास में लेट्स से समवन इज टीचिंग यू फाइनेंस, तो क्लास ओपन करते ही एक्सेल आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है. यू डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग देयर, राइट? आप क्या करोगे? जाके यूट्यूब पे देखोगे, सीखोगे ताकि कल क्लास वापस आ सको, राइट?
और इतना टाइम होता नहीं है आपके पास, देन यू विल सफर कि भाई 20 लाख रुपए लगा तो दिए, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा जो पढ़ाया जा रहा है। राइट। इफ देयर आर इंजीनियर्स देयर ना, उनको फाइनेंस से बहुत दिक्कत आती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लास चालू हो जाएगी, थिंक कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देन यू विल रिग्रेट कि भाई पैसे मैंने 20 लाख दे दिए, फीस पेमेंट कर दिए, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। राइट। सेम इज द थिंग फॉर नॉन इंजीनियर्स, उन्हें अगर लेट्स से स्टैटिक्स क्लास में बैठ के तो कुछ समझ नहीं आएगा। राइट। सो दैट इज वाई वी विल मेक यू अवेयर हेयर कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। देयर आर सम सेशंस वी आल्सो हैव वेयर वी विल टीच यू द बेसिक्स ऑफ दैट, ताकि आपको पता हो कि ठीक है, ऐसे इतना बेसिक तो मुझे आता है कि आई विल अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट द प्रोफेसर इज सेइंग, जो बोल रहा है उतना समझ में आ जाए मुझे। राइट। तो दिस इज वाई द एफर्ट इज नीडेड, सिंपली बिकॉज आपको अच्छी नौकरी चाहिए कैंपस जाके। यू वांट टू, अपने पैसा वसूलना है आपको, 100% जो आप पे कर रहे हो, आपको अपने एमबीए का 100% गेन करना है। राइट, दैट इज सिंपल, वेरी सिंपल लॉजिक। राइट। So the course outline is here. I will explain you what and how we are going to help you out. This is the session I will give you a basic orientation and introduction. The next session is very, very, very important. When you will join a B school, na, in second month or 1 or 2 months, your CV will be freezed. Right. Whatever you will add in your CV, you can add before that only. And your CV plays very, very crucial role to get the shortlist. Now you will ask, shortlist किस बात का? Right. When you will join a base school, na, in 1 or 2 months, the summer internship process will start. Company will start visiting the campus for summer internship. For that, you need a CV, a very good CV. Right. Can you guys just tell me which B school you are joining so that I can give you some realistic examples? Yeah, guys who are on YouTube, I can see your chat box, I can see your comment as well. Don't worry. And soon we will open the uh, and soon we will open the Kangen Sick link so that you can mark your Kangens there. Amritsar, Glim, BSc. You guys must be aware of the batch size of these colleges. Batch size, there are at least 300 people in the batch, right? कम से कम उतने तो बच्चे तो हैं ही. If you want to be placed in your dream company, top company, somewhere in company, you have to be in the top 10%. And the very first thing which a company looks for you is your CV. They do not know who is, let's say, who is the Subham Singh Mehra. They do not know who is Palak Agarwal. They just know your CV. Whatever they can in your CV is you, right? So you must have your CV as well prepared as possible. There are some things, tools, techniques we use to enhance our CV. Some of the basic thing you must be aware of, that power verb, how we can use the powered verb, how you can actually quantify our CV. So in the coming session, this will be taken by Saurabh, who is actually in HR. So he will take this session and he will make you understand how you can build your CV and how you can build your personal brand. Right. Post that, the second, I will say this is the very, very, very important thing in an MBA, the presentation skill. Because I will say 80% of the MBA is on presentations only, right? Be it the professor teaching you, be it you are presenting anything in the class, be it you are using that for the case competition or any other thing, right? This is a skill which is very, very crucial. And this is a skill that no one can teach you. No one can say you, okay, open Canva, do this thing, do that thing, and ho gaya. Right? This is a thing you only learn by practicing. You only learn when you will make numerous PPTs, presentations, right? So we will have a basic session on that as well. I will teach you how you can make a good presentation on Canva, right? Because Canva is the tool you are going to use for the coming 2 years, right? You will hardly open Microsoft PPT, you will just use Canva only, right? So I will show you some of the samples PPTs of my own, which I use for case competition, class presentation. Also, I will show you how we can make videos on Canva, right? So there is a basic session on that as well, so that when you will enter a B school, and someone will ask you to make a presentation, you will not roam around कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कब अब कैसे करें इन चीजों को, right? You will have a basic understanding of that. Post that, I will say कि AI tool, we call that ना कि हर एमबीए की शादी हो चुकी होती है किसी एआई टूल से. We are married to an AI tool. We cannot live without them. Or it, right? Without ChatGPT, you can nowadays you cannot pursue the MBA. Right. So that is the very, very harsh reality हम use करते हैं. So you should be aware of कि how we can actually leverage that, right, in a proper way, so that our learning is not hampered and we can actually be time efficient, right?
So we have a session on that as well. We will discuss on various different AI tools which we use in our MBA. After that, opinion building and structured thinking. This will again taken by someone from a top B school, right? In this session, this simply means na ki how you should present your opinion, right? Now, you must have given some of the JDs before joining a B school, right? Let's say there is a controversial topic. You know what is the situation there? सब लोग आपस में लड़ना चालू कर देते हैं कि मेरे हिसाब से ये होगा, मैं तो कहता हूँ ये होगा, ये कर दो, वो कर दो, राइट? बट दैट इज नॉट हाउ यू एक्चुअली प्रेजेंट योर ओपिनियन टू समवन इन द क्लास, right? So you have to present your opinion, your understanding, your insight in a certain way, so that I will say कि प्रोफेसर्स के नजर में अच्छे रहोगे, that will help you in longer run, और आपको भी पता चलेगा कैसे चीजें सोचते हैं, कैसे किसी चीज पे रिप्लाई करते हैं, right? So we have a session on that as well. और the second part is ना the thing about the thinking aspect, how you actually think for something. कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, नाउ वी आर इनटू एन एमबीए, हम 20 अपने नॉर्मली 10th क्लास 12th क्लास में नहीं है, वी हैव टू थिंक इन अ सर्टेन वे सो दैट वी कैन हैव द बेस्ट लर्निंग आउट ऑफ दैट दैट सब्जेक्ट, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं, वी विल लर्न देयर. आफ्टर दैट, अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग अगेन, हाउ वी एक्चुअली लाइक अ फॉर्मल ईमेल एंड कम्युनिकेशन. जैसे हम भी कम्युनिकेट करते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बी स्कूल में ऐसा नहीं होता है, राइट? वी डू नॉट कम्युनिकेट इन अ सिमिलर फैशन इन बी स्कूल. We have a certain professional way in which we have to communicate, right? For simple example, let's say someone is joining an exam, so you have to join various groups, and whatever your seniors, your, I will say, CR will post there, na, or the placement committee, you have to acknowledge that, right? You have to acknowledge that by a thumbs up. This depends, this varies based on the BA schools. There are certain rules, but you have to acknowledge that. बताओ आप में से कितने लोग को आदत है मैसेज देखते हैं एक्नॉलेज करने की, राइट? हम लोग तो देख के छोड़ देते हैं ना कि तो ठीक है, देख लिया, हो गया, क्या ही करना है. यू हैव टू एक्नॉलेज दैट. यू हैव टू राइट योर मैसेज इन अ सर्टेन प्रोफेशनल वे, राइट? Obviously also we write mails ना, तो we have to write our mails in proper professional formal way only, ठीक है? तो we will give you some format, we will give you some samples there as well कि this is how you actually do this thing, ठीक है? Again, a very crucial tool for MBA is Excel. बिना Excel के किसी का MBA हो ही नहीं सकता है. We will learn the basics of Excel, how we can use our Excel on a usual basis, daily basis for our MBA learning and B school thing, right? Obviously, we cannot teach you the whole Excel in depth in just 1 or 1.5 hours, but we will actually give you a glimpse of that. We will provide you with some resources you can refer after that as well. आफ्टर दैट, आपने सुना होगा कि एमबीए में सारी पढ़ाई केस स्टडीज से होती है. कितने लोगों ने सुना है? कहाँ सुनाइए, बताना साथ में थोड़ा. यार ये हर वर्क दिस यूट्यूब पीपल, यू कैन ऑल्सो प्लीज लाइक इन द चैट बॉक्स, कहाँ सुना है आपने ये चीज? हाँ, कहाँ सुना है? कहीं तो सुना होगा, किसी से सुना होगा ना. आई एम क्यूरियस टू नो कहाँ सुना है. मेंटर्स, टीचर्स, सीनियर्स, अच्छा. हमें बदनाम मत करो भाई. ठीक है, यूट्यूब और लिंक्डइन पे सुना है, अच्छा आपसे सुना है. ठीक है, ओके ओके. ठीक है, सुना है तो अच्छी बात है, ऐसा होता है, गलत थोड़ी बताया आपको, हमने सही बताया है, राइट? सो majority of the classes are based on case studies, right? Just think of let's say there are two different person. For example, let's say there is Jaslas and there is Utkarsh, right? So Jaslas knows how to actually read a case study, how to analyze that, how to get valuable insight out of that. Whereas Utkarsh is do not know anything, he just read a case study as a story, कि कहानी है पढ़ लेता हूँ, right? You can simply think ना कि जब उस क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा, जब उस पे हम Q&A करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, then we will share our thoughts on that. So both people have a different opinion on that, right? किसी एक का ओपिनियन काफी लर्निंग ओरिएंटेड होगा और इन डेप्थ समझ पाएगा वो चीजों को, whereas किसी और के लिए वो कहानी लगेगा, right? So there are proper structured way in which we actually analyze a case study, right? And guys, this is my humble request to all of you, whichever B school you're joining ना, प्लीज प्लीज केस स्टडीज को सीरियस लेना. प्लीज गो बिफोर हैंड प्रिपेयर ऑन दैट केस स्टडी. ये नहीं कि बिना पढ़े चलेगा क्लास में आके बैठ के फिर कहानी सुन रहे हैं, बिकॉज दैट विल हैम्पर योर लर्निंग अलॉट, ठीक है? तो इस पे थोड़ा एफर्ट देना, इसको आप याद रखना कि ऐसे करते हैं. प्लीज गो प्रिपेयर बिफोर हैंड. इन दिस सेशन वी विल शो यू सम रियल केस स्टडीज फ्रॉम वर्क एंड कैमरीज और
आई विल से आई एम बैंगलोर का भी है कुछ हमारे पास. वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ वी एक्चुअली एनालाइज द केस स्टडी, राइट. आफ्टर दैट कंसल्टिंग फ्रेमवर्क, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक योर करियर इन कंसल्टिंग? बताओ. मी. अच्छा, मी के साथ आप बताओ विच बीच विच कंसल्टिंग फर्म यू वांट ज्वाइन. अभी 5 लोग वैकेंसी किस पे निकल लिखने वाले हैं. लिखो लिखो. हाँ, MBB, वाह वाह, वेरी नाइस. फुल फॉर्म लिखो भाई. Deloitte. करो 20 को ज्वाइन करो, फिर आई विल आस्क यू अगेन दिस क्वेश्चन, डू यू रियली वांट टू ज्वाइन Deloitte? एसेंशियल, चलो केशव को पता है पैसे ज्यादा कौन देता है. जो हमको ले ले. बढ़िया. दिस इज द ओनली राइट आंसर, जो हमको ले ले. यू डू नॉट नो विच कंपनी विल टेक यू, ठीक है, जो आपको ले ले, ग्रीन कंपनी, ठीक है. So yeah, so we will learn here the consulting frameworks. There are different various frameworks consulting के लिए. आपने कुछ पढ़ा होगा अपनी जीके प्रिपरेशन में भी, that गिलोइट का है ना कुछ. मैं भी भूल गया यार, जिसमें काउ, कैस, समथिंग इज देयर, राइट. एनीवन ने पढ़ा है वो? 7 years पढ़ा होगा. कोई तो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, नो. ठीक है, सो वी विल लर्न वेरियस. सुना है बस, अच्छा. हाँ, BCG फ्रेमवर्क, राइट, सॉरी. सो वी विल लर्न वेरियस प्रैक्टिकल कंसल्टिंग फ्रेमवर्क्स, जिसका यूज करने से आपकी केस कॉम्पिटिशन में हेल्प होगी. यू विल गेट हेल्प इन योर क्लास प्रेजेंटेशन, क्लास डिस्कशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट, राइट. After that, again, this is a very, very crucial session, case competition insights and strategy. Here you will learn what is the importance of a case competition, how you can go about that. Okay? So we will bring someone who must be a on-top top ranker. He will come there, he will guide you that how you can actually crack a job or a SIP out of a case competition. Okay? There are various case competition nowadays, right? किसने किसने देखा है कोका कोला वाला जो एड चल रहा है लिंक्डइन पे? चलो बढ़िया. बोला बेच रहे हैं. नाइस नाइस. तस्वीर नाइस. After that, analytics basic, you must know some of the basics of analytics of let's say language R, or very basic level of analytics you require, like SPSS is there. After that, again, financial modeling. This is very crucial for someone who do not come from a finance background. You will learn the basics of there, that how you can actually. Look, I'll say you very clearly here ना, ऐसा नहीं है कि ये सेशंस का बाद एक्सपर्ट बन जाओगे आप, right? But you will be aware to know things better. You will be able to understand things better. अब पता होगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कैसी चीजें होती है, राइट. सो एटलीस्ट यू विल बी इन दैट पोजिशन, तुम्हें पता रहेगा कि कुछ समझ में तो आ रहा है, राइट. दिस सेशन इज, आई विल से, मेक और ब्रेक सेशन. देयर वी विल बी डिस्कसिंग द एक्चुअल myths about the B school. I will break your heart, I will break your emotions, and will tell you the reality of a B school, how a B school actually looks like from inside, how your 2 years are going to be there. True reality about PlayScom and every other thing will be there, right? And when I will break you here now, you must need some medication, right? So, sorry, medication. So after that, we have a session as well, right? So we are in collaboration with the Art of Living, right? How many of you have heard of the Art of Living? That is a very big organization, right? Mhm. Good. So we are in collaboration with them as well. We are going to conduct a free session with them on networking, relationship management, meditation, and stress management. After that, we are going to plan some of the questions in this session, and those will be asked here in your test. And if you get 75% of the marks, you will be certified with this course certification, right? Also, I think next slide that is there. Okay, so this is the thing you are going to have. You will get the certification, which you can actually add in your CV. And if any B school asks us for the verification of that, we will verify that as well. Don't worry. Okay? Question will be from the sessions only, right? Yeah.
So we will verify that as well. Like I remember that XLRI, SIBM Pune asked for the verification as well. So we will verify that as well. Don't worry. There are rewards, cash reward for the top three performers there. ठीक है? Whoever the top three will get cash reward. I don't know how much is that, but कुछ तो मिलेगा. After that, a few of you will get the chance to be a campus ambassador for PrepBee in your BA school. So you will be earning something in during a BA school as well. Right? That is a After that, this is how you will be eligible for the certifications. First of all, you have to attend the live classes mandatory. In case you can just miss one or two classes, that is based on your preference, right? I will say that 80% attendance is must, right? And Purva, are you here? Please drop the attendance link in the group so that people can actually mark the attendance. Okay, Ayush. Hmm. So you guys, please check the WhatsApp group we have created for the shortlist peoples. The link will be open for 2 minutes. You have to mark your attendance there. Please ये करके आ जाओ पहले. Guys who are on YouTube, you can also, or I believe that are also in the shortlisted WhatsApp group. So वहाँ link मिली होगी. Please mark your attendance. That is very crucial for the certification part. This is only because we do not want to distribute the certification to everyone out there. Some exclusivity there. देखो देखो आया होगा ग्रुप में आया होगा. Hello, excuse me. Yes. Mm-hmm. Uh, I have opened the Google document which is provided in the WhatsApp group, but I see myself absent. So, how to mark it present? Just you tap on that, and you will got an option of mark that present. Let me check, please. It's Mm, not happening anything. I will check. I think that is happening there. Just click on present. You will get an option below to mark that present. Just Okay, guys. In the meanwhile, you guys are marking your attendance. I will proceed with the session. Don't worry, that So will I open for have a 5 6 minutes. question. I Yes. not able to so my select. name is not there. Like I registered today and my name is not there. Please drop your doubt in the chat in the WhatsApp group. So someone will help you out there, right? Oh, okay. Sir, I have a query. Okay, I will just open the chat box there. You guys can now send the message there. If you guys have any doubt or concern, please put your chat concern in that WhatsApp group. Okay? Sir, am I audible? Sorry. Am I audible, sir? You're not audible. You're not audible. Please put your concern in the chat. You're not audible at all. So that is one thing, guys. The second thing is ki the instructor may give you some that just to enhance your understanding of the session, right? Let's say for the Excel session, they ask we do not have any such thing. But for the session of presentation classes, right? So we are going to have some class there. Tushar, there is a group named with EEYP shortlist. Please check that, right? So what kind of series log? CV log after 1 or 2 months you join a B school, depending on the B school, right? Hmm. Don't worry, we will keep that before you guys have some concerns while marking your attendance. We will keep that open post the session as well.
for this class only. Don't worry, right? That will resolve it. So after that, we are going to have a test. There will be, I guess, 40 questions, which will from the sessions only, right? So only the guys who are passing that with 75% marks will be given the certificate. That is very clear for our end, right? Because we want to allocate certifications to the people who are actually worthy. We do not want to distribute the certification in mass, right? Because सबके पास आ जाएगा तो वैल्यू गिर जाएगी. Like it's a very simple thing. Again, a wrong slide. Oh. Okay, so we are done with the session here. Now you guys can put your doubts in the chat box. I will be happy to answer all of those. Guys, I doubt you guys are audible. Please use the chat box, right? No, cash will happen for one session only at the end of the sessions. Yeah, the session will be at 9 to 9:30 p.m. Not after that, not before that. There might be 10, 15 minutes of delay or anything like that. We will update you accordingly. The sessions are live on YouTube, so you guys will have the recording directly on YouTube. Shush between Rohtak and DSC. If DSC and Rohtak. If you want a proper India life exposure, then go for Rohtak. If you want to save your money, ROI, then go for DSC. Sessions will be almost around 9 p.m. only. अनिरुद्ध गुरजार आपको लिंक नहीं मिला. प्लीज चेक योर मेल. आपको मेल पे पक्का से ग्रुप का लिंक आया होगा. For this session, we understand that there are some concerns for the contingency. We will take care of that. We will resolve that before the coming session so that you guys can mark that smoothly. Which would be good in long term? I depend on loan. Deepak, you can join IIM Rohtak. That is based on the personal preference because the brand name of IIM will help you in a longer run. So I hope guys we are clear about our expectations, sorry, your expectations from this EEYP, right? I hope you find this interesting and useful for you. हो जाएगा प्रथम, डोंट वरी. आप वहाँ चैट बॉक्स में लिख दो कंसर्न को. दैट विल सॉल्व दैट आउट. देखना अनुरुद्ध, उससे पहले एक और मेल आया होगा आपको, उस पर लिंक पक्का आया होगा. या फिर आई विल आस्क द एडमिन अपूर्वा, प्लीज मेक श्योर दैट द अटेंडेंस लिंक इज एडेड इन द डैशबोर्ड ओनली. इनको डैशबोर्ड पे ही मिल जाए सो दैट दे कैन मार्क देयर. डोंट वरी, वो आपको डैशबोर्ड पे लिंक ऐड करवा देंगे तो वहां से यू कैन एक्सेस दैट एज वेल, राइट? आई हैव ज्वाइंड आईएमके. व्हिच वन टू चूज, मार्केटिंग और आईएमके? करो चुपचाप मार्केटिंग कर लो भाई. फाइनेंस करना है फिर ही मार्केटिंग कर लो इफ यू वांट टू हैव अ जॉब. Tapmi or IMI Delhi for marketing. Bhai, both are very equivalent policies. You can choose that based on your personal preferences. Tapmi is a good brand name. People know Tapmi. Yeah. If you guys do not have any doubt, you guys can drop off. The session is already over. I'm just checking some doubts if you guys have any. BMTech, I guess यार marketing कर लो. So thank you guys for joining in. Let's have a good learning session ahead. IMI Delhi BFS is good. Depending on Sagnik, if you are having other options or not. You can, Harshit, you can anyways ask the doubt in the end of the session. Any mentor will help you out. Since many session case competitions are happening, how important it is to participate. Guys, Shruti Rani, please start participating. I know that there is 99.9% chance that you will not win or reach any good position in your starting early case competitions, right? You have to follow 100 times before you actually win a case competition. So please start as early as possible. Thank you, Tasveer.
व्हाट रोल्स आर ऑफर्ड इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस? मार्केटिंग वालों से सेल्स करवाते हैं, करना पड़ेगा। बी रेडी फॉर दैट। इवन इफ यू ज्वाइन एबीसी ना, वहां भी करना होता है, राइट? सो दैट इज द थिंग। फाइनेंस वाला यूजुअली एनालिटिक्स का रोल मिलता है स्टार्टिंग ऑफ द करियर। In your opinion, how to get into top 10% of the batch, both academically and placement wise? My very simple answer to that is ना कि if you know about MBA कि MBA क्या होता है, कैसे होता है, what things are there ना beforehand, before joining a B school, you are already ahead. Because other people will spend their 1 or 2 months understanding this thing only, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। आपको उतना ही पता नहीं, you are quite ahead of the batch. Exam MBA में specialization is which is every is equivalent। आप operations ले लो, finance ले लो, marketing ले लो, each one of them is quite equivalent। any recommendations of courses? देखो guys, if anyone have this doubt about this course कि किस कौन से कोर्स करने से आपकी सीवी अच्छी हो जाएगी, the very clear answer to that is no, I will say none of the courses there which can actually enhance the CV unless that is a CFA, SHRM, Six Sigma from a good reputation of company, और that level of courses। उसके नीचे आप कुछ भी कर दो, that will not add anything in your CV। ठीक है? हाँ, बस CV blank नहीं दिखेगा, that is one thing। try to look for live projects or internship if you can find any। ठीक है? that will be added to your CV and that will actually give you an upper hand। ठीक है? बाकी तुम कोर्सेज कर लोगे, कहीं ना कहीं ऐड हो भी जाएगा ना, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। सर आई नीड टू डिस्कस टू whom आई हैव टू कॉन्टेक्ट एंड हाउ? ग्रुप में हर से देखो एडमिन होंगे, यू कैन रीच आउट टू देम डायरेक्टली। वांट टू डू फाइनेंस, आई एम रियली बेस्ट कॉल आई हैव। हाँ तो जाओ यार, फिर बेस्ट कॉल है तो जाओ, फिर क्या पूछना है। अपनी वाले वेटलिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे? जेन्युइन कंसर्न, बिकॉज उन्होंने वहाँ काफी ज्यादा बफर कॉल दे रखा है। पहले उनको तो क्लियर होना दो। जीआईएम में फाइनेंस करे और मार्केटिंग करे। जीआईएम इज वेरी गुड फॉर एन एनालिटिक्स कोर्स, बट आई हैव टू चेक अप फॉर दिस यार। आई डू नॉट हैव अ क्लियर आंसर फॉर दिस। ग्लिम गुड़गांव वर्सेस फोर्ड आईबी। ग्लिम गुड़गांव है, अच्छा, देन फोर्ड आईबी। अगर ग्लिम चेन्नई होता तो ग्लिम चेन्नई जाना था। तपमी भाई, तपमी के इतने प्रोग्राम है, मुझे भी नहीं पता कितने प्रोग्राम है। आरबीए, आईबी, रूरल मैनेजमेंट, पता नहीं क्या क्या। आई हैव टू चेक, नो आइडिया। गेसी आईबी इज गुड बिकॉज फॉर द आरओई फैक्टर। Yeah, you can do live project while in the B school as well, or you can use LinkedIn, Internsala, Unstop to find these live project opportunities. And if you want to enroll in a course come live project course, then you can refer for PrepBee YLP second courses as well। No promotion you can get। IMI review is the worth of it। भाई IMI, XIMB, IMT, तपनी, SIBM, Bangalore, Hyderabad, and all of those, whoever is charging more than 15 lakhs, na, none of them are actually worthy in respect of the ROI। ठीक है? So if you are going there ना, अपना ROI 50% मान के ही जाना। No work experience, will that hamper some internship a lot? That will hamper a lot if you do not have internships or live projects or anything as well at। वो भी नहीं है तो हैम्पर करेगा। वो चीजें हैं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैनेज हो जाता है। हाउ टू इम्प्रूव सीवी? अगेन गाइस, सीवी इम्प्रूव करने का द ओनली legitimate way is to find a live project or internship। बाकी आई कैन टेल यू 100 थिंग्स कि ये सर्टिफिकेशन कर लो, वो कर लो, बट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द होल एमबीए जर्नी एंड बिकॉज आई होप यू गाइस डोंट नो मी, आई एम एन एचआर बाय प्रोफेशन। तो हमें पता है यार कि कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सर्टिफिकेशन से, अनलेस दैट इज सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ गुड रेपुटेशन इंस्टीट्यूशन लाइक एसएचआरएम, लाइक सीएफए, राइट? फाइनेंस गाइड हैज अपर हैंड देयर। फाइनेंस वाले एनआईएसएम कर सकते हैं, दैट होल्ड्स अ बिट वैल्यू। हाँ, एनआईएसएम थोड़ा चल जाता है, थोड़ा सा। हम पढ़ लेते हैं, अच्छा एनआईएसएम ठीक है, ओके, एफर्ट मारा है बंदे ने, जाके एग्जाम दिया था। एनपीटीईएल या क्या नाम था उसका? कुछ और भी नाम है ना उसका? हाँ, एस से नाम है, ऐसा नॉट रॉन्ग। आई एम इंटर्निंग सम स्वयं, यस, आई एम इंटर्निंग समवेयर टिल 30th ऑफ जून एंड आई हैव माय रिपोर्टिंग। हाँ कोई बात नहीं, अलाउ होता है, चलता है, वर्क्स। बट अगर आपके जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो आपका रेपो अच्छा है ना, तो उनसे बोलो यार कि एक वीक पहले छोड़ दे, उससे पहले सर्टिफिकेशन ले लो।
मैकेजी फॉर कोर्स। देखो फायदा उसका है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत फायदा है उसका, बट आपको लगेगा कि सीवी मैकेजी ऐड कर दूंगा बस शॉर्टलिस्ट की शॉर्टलिस्ट आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वो आपका किसी कोर्स नहीं होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस ये EYP या फिर एनी अदर कोर्स किसी से कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि सीवी खाली नहीं रहेगी आपकी, मैकेजी लिख के आएगा, बट दैट डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू। द लर्निंग ऑब्वियसली होल्ड वैल्यूज। जो सीखोगे वो तो सीख लोगे। राइट, डू यू गाइस हैव एनी अदर डाउट? And don't worry, you can keep asking this doubt in the end of session of any other session as well. All the makers will be answer your doubts honestly, promptly, without any namak mirch on that, right? That is what we intend to help you with. So don't worry. Is it really possible to get a SIP in finance in college without? हाँ obviously यार मिलता है, obviously. POR में हमारी पोजीशन मैटर या फिर लेवल ऑफ थिंग जिनका POR है, डिपेंड्स क्या चीज़ है वो। हाँ कर दूंगा तो सारा, अगर मेरे पास एक्सेस होगा तो मैं कर दूंगा, नहीं तो किसी एडमिन को फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी। सर मत बोलो भाई, कहाँ से सर लगता हूँ मैं तुम्हें? माय नेम इज आयुष बाय द वे। यस, ताकि मैं इनको देना भूल गया, सॉरी, कोई नहीं, अगले सेशन में। ओके कूल, सो डू आई हैव एनी अदर डाउट और वी कैन रैप अप द सेशन? कूल, thank you guys, thank you for joining in. I hope you guys will enjoy the upcoming session. And for the 26 guys who are still here, just wanna let you know, please be for the next session, please come with a rough CV at least, right? So that you can actually understand what the mentor is telling you, right? This is for the last 25 people, right? So good night, guys. Bye bye. Take care.